The professional ethics part 3 applicable to CA in general, whether in practice or not. So it is fellow CA. अब fellow CA में क्या है? CA in general, whether in practice or not, will be deemed to be guilty of professional misconduct if he is not a fellow CA, but act like a fellow CA. अब वो fellow CA नहीं, वो FCA नहीं है, बट खुद को FCA बता रहा है. आपको बताया ना, FCA कब बताया जाता है? जब वो 5 साल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस या सर्विस में हो तो. And रसगुल्ला रिप्लाई यानी कि सी इन जनरल वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नॉट रिप्लाइंग टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, जो ICS से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो नहीं दे रहा है, या फिर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है विद इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स. 4 bodies related to ICI Council Committee Quality Review Board. 4 body related to disciplinary mechanism, Appellate Authority, Disciplinary Committee, Board of Discipline, Disciplinary Directorate. Not reply नहीं कर रहा है to ICI about proprietor, business, director of a company. Not replying to ICI about the training articles even after removal from membership. Not replying to ICI about training article even after removal from membership. Not replying to ICI about proprietor, business, director of a company. उसके बाद हम बोल सकते हैं then CA in general, whether in practice or not, will be deemed to be guilty of professional misconduct. Applying for tender inquiry or asking work from other chartered accountant under clause 6, asking work through write-up under clause 7, giving knowingly false information. Then part 4 applicable to CA in general, whether in practice or not. Imprisonment. CA in practice, whether in practice or not, will be deemed to be guilty of professional misconduct if he is held guilty by civil or criminal court for offence which is punishable with a term not exceeding 6 months. Conviction is required only. Allegations and a pending case is not sufficient. Conviction should by court. Actual punishment is not important. What is maximum punishable for offence in law should be seen. तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या था? इम्प्रिजनमेंट के सी इन जनरल वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ इज आर गिल्टी बाय सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट फॉर ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इन अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months. And conviction is required only. Allegation or pending case is not sufficient. Conviction should by court. Actual punishment is not important. What is maximum punishment for offence in a law should be seen. Close to is shame on you disrepute to see in general whether in practice or not will be held of guilty of other misconduct if opinion of a council has brought disrepute to profession or institute because of his action, whether in a professional work or personal work. Section 22 gives a list of conditions which leads to misconduct given in schedule. Section 21 gives power to go beyond schedule and declare other action as a misconduct. In the past, following actions were declared as other misconduct. Anger using language, abusive, objectionable anger, maligning a person by publishing advertisement with a malified intention, forcing article for doing other business and occupation, agriculture, bank in a bank audit, submitting and claiming bogus and fake bills and expenses, client getting loan sanctioned with the coercive methods from client, coerce payment of fee. Retain books of client exercising line and not allow as per ESB, irrespective of whether fee is pending. Then deceive करा है, manipulating minute books of company, submitting fake documents to company, claiming they are issued by ROC और other authorities. तो ये सारा किस पर आ रहा है हमारे? ये सिंपली हमारा आ रहा है जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, पार्ट 4 क्लोज 1, दैट इज़ क्या? इम्प्रिजनमेंट. तो ये सारे केसेस उसमें आ रहे हैं. Imprisonment, manipulate minutes, other misconduct वाला, minutes books of a company, submitting fake documents to company, claiming they are issued by ROC or other authorities, issuing fake experience certificate on his letterhead to others, forging with will of relative for unjustified benefit, employer submitting fake experience certificate to get job, gross negligence while doing job fraud, misappropriation of ICI fund negotiable for personal purpose. CA was managing director of NBFC and check issued by him on behalf of NBFC bounce back lack of funds. Government not replying to authorities, export authorities, government fund unauthorized possession of a government records by CA, writing book on how to generate a secret income, black money, filing written 2 times to claim basic fabricated advance tax challans by charging account detail and then encashing client money in a fake account of a client and then misappropriating it. Image recognition technique of second schedule. Second schedule part 1 क्या आता है?
कॉन्फिडेंशियलिटी दैट इज क्लोज 1, रिपोर्ट ऑन। फिर देखो शेड्यूल 2 में क्या आता है हमारा, देन कम्स, देखिए आई थिंक यू शुड एनरोल फॉर PW बिकॉज PW पे अफोर्डेबल बेचेस है मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक यू शुड गो एंड एक बार वहाँ पे डेमो लेक्चर्स देख लीजिए। और देखिए आई हैव टेकन फ्रॉम अल्डाइन CA बट वो करेंटली प्रॉपर आई डोंट नो अबाउट कि वो करेंटली एग्जिस्टेंस में भी है या नहीं। अदरवाइज आई हैव टेकन द होल फाउंडेशन बैच फ्रॉम CA अल्डाइन, बट करेंटली तो आई प्रेफर यू टू गो फॉर PW इफ़ यू, एंड यू विल फाइंड अफोर्डेबल बैचेस देयर बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल बैचेस ही है। सिंस PW इन अ CA स्ट्रीम में बिगनर भी है तो वो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है बिकॉज पहले तो वो साइंस में ही था ओनली। Then comes the detail and then encashing client's money in a fake account of a client and then misappropriating it। देखो उसके बाद आ जाता है हमारा then comes the, तो हमारा जो क्लोज 1 है वो पूरा समअप हो जाता है यहाँ पे जो शेड्यूल 1 है। अब आता है हमारा सेकंड शेड्यूल। तो शेड्यूल जो हमने लास्ट पढ़ा है वो पढ़ा है पार्ट 4। पार्ट 4 में 2 ही क्लोजेस थे, एक तो हमारा था इम्प्रिजनमेंट और सेकंड जो था देन कम्स, तो वी हैव डिस्कस शेड्यूल 1 का, फर्स्ट शेड्यूल का फोर्थ पार्ट बिकॉज अर्लियर वी हैव डिस्कस द एंटायर शेड्यूल 1। आफ्टर दैट currently we are discussing, we have ended up that also part, that is what फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 4 2 क्लोजेस थे, इम्प्रिजनमेंट एंड डिसरेप्यूट वाला, जैसे हम बोलते हैं डिसरेप्यूट, इम्प्रिजनमेंट एंड डिसरेप्यूट। ठीक है, अब नाउ वी आर ऑन सेकेंड शेड्यूल। देखो सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है, क्लोज 1। क्लोज 1 सिंपली किस बारे में बात करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करता है। देन क्लोज 2 इज रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लोज 3 इज फ्यूचर एस्टिमेट। क्लोज 4 इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो। क्लोज 5 इज मटेरियल फैक्ट। क्लोज 6 इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लोज 7 इज जहाँ पे ग्रोसली नेग्लिजेंट हो। क्लोज 8 इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्लोज 9 इज ऑडिट प्रोसीजर। क्लोज 10 इज बैंक अकाउंट। देन हमारे पास आ जाता है सेकेंड शेड्यूल। तो देखो हम इसे रिकॉल तो करने वाले हैं। देखो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से द कमर्शियल, आई कुड नॉट एबल टू रिलेट व्हाट यू वांट टू से। So simply we are on second schedule.
सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास कितने क्लोजेस है? अगेन वी हैव पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में वी हैव 10 क्लोजेस, पार्ट 2 में वी हैव 4 क्लोजेस एंड पार्ट 3 में वी हैव 1 क्लोजेस. तो इन टोटलिटी वी हैव 15 क्लोजेस. तो 15 क्लोजेस को भी रिकैप तो हम करेंगे. देखो शेड्यूल 1, 2, 3, 4. क्या कर रहा है? देखो सेकेंड शेड्यूल में वी हैव हाउ मेनी क्लोजेस? सेकेंड शेड्यूल में वी हैव 10 क्लोजेस. क्लोज 1 बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें करता है. क्लोज 2 इन रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लोज 3 इज फ्यूचर एस्टिमेट. क्लोज 4 इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. 5, 6, 7, 8 ये हमारे उसमें FR में भी आता है. वो आता है क्लोज 5 मटेरियल फैक्ट. क्लोज 6 मटेरियल मिस स्टेटमेंट. क्लोज 7 ग्रोसली नेग्लिजेंट. ये बहुत फेमस है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आता है. क्लोज 7. क्लोज 8 इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. क्लोज 9 इज ऑडिट प्रोसीजर. क्लोज 10 इज बैंक अकाउंट. तो वी हैव सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास पार्ट 1 में 10 क्लोजेस है. 10 क्लोजेस में नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें करता है. क्लोज 2 रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लोज 3 किसकी बात करता है? क्लोज 3 सिंपली बात करता है ऑन फ्यूचर एस्टिमेट. क्लोज 4 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. क्लोज 5 मटेरियल फैक्ट. क्लोज 6 मटेरियल मिस स्टेटमेंट. क्लोज 7 ग्रोसली नेग्लिजेंट. क्लोज 8 सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. क्लोज 9 ऑडिट प्रोसीजर. क्लोज 10 बैंक अकाउंट. फर्दर हम और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास पार्ट 2 आता है. पार्ट 2 में हमारे पास टोटल 4 क्लोजेस होते हैं. क्लोज 1 उसमें क्या बात है? अगर आपने कोई कॉन्ट्रावीन किया एक्ट, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, तो ये किस में आता है? सेकेंड शेड्यूल के हमारे सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 में आता है. अगर कॉन्ट्रावीन किया एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइन, या फिर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी बाय एम्प्लॉय ब्रेक हुई हो, या फिर हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन. एंड देन क्लोज 4 इज डिफॉल्केशन. तो ये सिंपली हमारे पास आ जाता है. तो देखो सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास 4 क्लोजेस है. अगर कोई कॉन्ट्रावीन कर रहा है एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइन, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी बाय एम्प्लॉय, या फॉल्स इंफॉर्मेशन, या फिर हमारे पास आता है क्लोज 4 इज मनी और डिफॉल्केशन. फिर सेकेंड शेड्यूल में पार्ट 3 में हमारे पास एक ही क्लोज आता है एंड वो आता है ओवर अदर मिसकंडक्ट. तो देखिए अब हम फर्दर रीड देते हुए चलते हैं. पार्ट 1 जो है एप्लीकेबल है टू सी एंड प्रैक्टिस. देखो क्लोज 1 में हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें करते हैं. क्लोज 1 सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास 10 क्लोजेस है. 10 क्लोजेस में हम क्लोज 1 की बात करते हैं अबाउट दी कॉन्फिडेंशियलिटी. सेम प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. उसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट को नहीं बताना. ही डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट टू एनी अदर पर्सन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड परमिटेड बाय क्लाइंट. तो हम क्या बोलते हैं कि सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास 10 क्लोजेस है. 10 क्लोजेस में क्लोज 1 आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी. सेम प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट टू एनी अदर पर्सन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड परमिटेड बाय क्लाइंट. फिर सेक्शन 126 ऑफ दी एविडेंस हमें ये बोलता है गिव्स लीगल प्रिविलेजेस प्रोटेक्शन टू एडवोकेट्स ये सिमिलर प्रोफेशनल फॉर नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन गिवन टू दैम बाय क्लाइंट ड्यूरिंग प्रोफेशनल वर्क. If any law requires specific disclosure by auditor, then it is covered in exception. Sometimes client may be involved in illegal and unlawful activities. So, in such a situation where law are contracting or there is a legal complexity, legal advices should be taken. Performance of professional duty. Many times disclosure may be required because of law, standards, guidance, note as a terms or condition of assignment. Such a disclosure are allowed because either they are required by law, permitted by client through terms and conditions. Competent permission, person permission, proprietor client, proprietor, partnership client, any partner, company client, BOD or managing director, etc. if power is delegated.
अब देखो वर्किंग पार्टनर्स में क्या है, ऑडिटर इज ओनर ऑफ वर्किंग पेपर्स, नो ऑब्लिगेशन टू शेयर देम विद एनीवन, ही कैन एक्सट्रैक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ कवर्ड अंडर एक्सेप्शंस, डॉक्यूमेंट शेयरिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू ऑल ऑडिटर्स सच एज ब्रांच ऑडिटर्स एंड इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर में शेयर डॉक्यूमेंट इफ ही फील्स इट इज रिक्वायर्ड एंड कवर्ड अंडर एक्सेप्शंस। क्लोज टू, तो क्लोज वन हमारे किसकी बात करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। क्लोज टू हमारी बात करता है किसकी, क्लोज टू सिंपली बात करता है रिपोर्ट ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है एनी रिपोर्ट ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी फाइनेंशियल डेटा अनलेस इट इज एग्जामिन्ड बाय सीए हिमसेल्फ, पार्टनर, एम्प्लॉयर एंड अनदर सीए इन प्रैक्टिस। तो क्लोज वन सिंपली किस बारे में बात कर रहा है, क्लोज वन सिंपली बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी बाय, कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें करता है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, क्लाइंट्स की डिस्क्लोज नहीं करना है इन्फॉर्मेशन। क्लोज टू बात करता है रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डीम टू बी गिल्टी होगा अगर सर्टिफाई करता है, सबमिट करता है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी फाइनेंशियल डेटा अनलेस इट इज एग्जामिन बाय सीए हिमसेल्फ, पार्टनर, एम्प्लॉयर एंड अदर सीए इन प्रैक्टिस। Cases about who has done examination apply close to, examination by article and relative friends are not valid नहीं होते हैं। उसके बाद क्लोज 3 is a future estimate, future estimate say in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if on his or his firm behalf he issue report on a forecast on a future financial performance and a financial position which looks like he is vouching, confirming accuracy and forecast और giving guarantee और surety और forecast। उसे क्या नहीं करना है, future estimate नहीं करना है। Say in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if he, his firm behalf, he report on a forecast on a future financial performance and a financial position which looks like vouching, confirming accuracy and forecast and giving guarantee and surety on forecast. He can give report as per SA standards on assurance engagement 3400 where he will comment just on reasonableness of assumptions and not on a final outcome. Following other standards and guidance note, apart from clause 3, CA should follow other relevant standards and guidance note. Standards on assurance engagement 3400 should be followed by performing examination and reporting on forecast. Guidance note on a forecast 1982. This guidance is not in and now replaced by 3400. It uses to allow preparation as well as examination by same CA, but now in SE 3400 preparation of forecast will be management and examination and reporting by CA. Guidance note on reports in a company prospectus is 2019. If reports are for prospectus, then CA has to follow this guidance note along with clause 3. See if there is a clarity with respect to wordings of report and answer accordingly. If there is not clarity, then explain from both point of views of when wordings are appropriate or inappropriate. Then for case studies, forecast 97 projection statement found guilty under clause 3 because of inappropriate wordings. Clause 3 working with gross negligence. Clause 8 did not collect sufficient and appropriate evidence. तो clause 3 क्या है? Because of inappropriate wordings. Clause 7 is grossly negligent and clause 8 is did not collect sufficient and appropriate evidence, collect नहीं किए हो तो। उसके बाद आता है हमारा clause 4 is a substantial interest. See in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if give opinion on a financial statement and an entity in which his partner and a firm having substantial interest that is 20% or more. See in practice जो है that the same will be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो opinion दे रहा है on a financial statement and entity in which his partner and a firm having substantial interest 20% and more. ICA has clarified that many assignment will get included in clause 4, that is inclusion and exclusion. Any engagement which involve attestation commenting on reliability of information after performing examination will be covered here. Different types of audit, certification, etc. Exclusion का FCA is giving consultancy service, no need to see substantial interest, देखने की ज़रूरत नहीं है substantial interest में। उसके बाद हमारा आता है देन नेक्स्ट कम इफ़ सी एम्प्लॉय इज प्रिपेयरिंग आंसरिंग एम्प्लॉयर अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर फॉर इंटरनल पर्पज इन क्लोज 4 इज नॉट एप्लीकेबल. क्लैरिफिकेशन ऑफ क्लोज 4 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ वाइल्ड राइस लिमिटेड. सेक्शन 288 ऑफ IT Act, CA should not do tax audit if is disqualified under section 288 of the IT Act. Internal auditor of entity cannot perform GST audit now, not required. CA writing books should not do audit and vice versa. Internal auditor of a company should not do statutory audit. Liquidator appointed under section 348 for realizing assets, paying liability and making statement of liquidation cannot do
state audit of company. Director cannot do for 2 years from date of resigning or completion of tenure. Cannot perform attestation function for relatives. Internal auditor cannot do tax audit. Consultancy maintaining such a high level of independence is recommendatory and not mandatory. Employer CA cannot attest financial statement of entity and other entity under same management. Lecturer cannot do audit of college and trustee cannot do audit of trust. Then आता है हमारा क्लोज 5 that is material omission. Same practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if अगर कोई material omission हो गया है, अगर financial statement was known to him but he did not disclose it in a manner in which it was required. If there is a material omission, या हम बोल सकते हैं material fact. Inclusion exclusion are same as clause 4. Material will be as per SA 320. Consider materiality of item for balance sheet as well as P&L. Property mortgage but no disclosure of a charge in financial statements. Sinking fund not made as per debenture trust date. Loan taken from employee provident fund trust but loan and attest and जो भी asset purchase are not disclosed. उसके बाद आता है हमारा तो मटेरियल फैक्ट तो क्लोज 5 हो जाता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लोज 6 हो जाता है. In practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if material misstatement is present in a financial statement. It is known to him but he did not disclose as it was required. Liability provision contingent liability is understated. Document statement etc. submitted to tax authority are incorrect and misleading depends on whether or known to him. Certificate issued to bank for his unuse of funds is incorrect. Clause 7 क्या बोलता है? Same practice will be deemed to be, this is the famous clause I may say, अगर same practice will be deemed to be guilty of professional misconduct. He is not exercising due diligence and is grossly negligent. In CA practice, practical flow after appointment failed to go and represent client in income tax hearing. Went for audit but failed to detect obvious apparent fraud. Performing audit but failed to complete as per time schedule as per statutory deadline. Signing report before signing by BOD or signing 2 sets of financial statement for same company for bank and income tax. Writing in a report that details are given in notes but not notes are attached to audit report. Clause 7 same practice will be deemed to be guilty of professional misconduct. He is not exercising due diligence and is grossly negligent. In practical life law, after appointment failed to go and represent client in an income tax hearing, went for audit but failed to detect obvious apparent fraud, performing audit but failed to complete as per schedule of statutory deadline, signing report before signing by BOD or signing 2 sets of financial statement for same company for bank and income tax, writing in report the details are given in notes but no notes are attached to audit report. Report in sent through cash on delivery and value paid post. Clause 8 is sufficient and appropriate evidence. Same practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if he expresses opinion and comment on reliability of information without collecting sufficient appropriate evidence. Exception in the sense of not collecting sufficient appropriate evidence were material such that opinion should have been negated but still opinion was given. Reference to clause 7 where there is a situation of lack of evidence, apply clause 8 and along with that apply clause 7. Also for gross negligence, apart from above, more clauses like 2, 5, 6 can be applied if required. Reference to clause number is generally sufficient to get full marks. Newspaper circulation certificate. Newspaper has to submit certificate about circulation of news, number of copies. C issue certificate without checking printer, bill, dispatch, seals, record, revenue collection, etc. Held guilty under clause 8 and can apply for clause 7. Certificate for bank loan. CA are asked to submit certificate on the basis of which loans are given to borrower. CA issued well certificate without appropriate examination and evidence and further certificate did not explain nature of examination and its limitation. Held guilty under clause 8. मतलब वो क्या कर रहा है, उसके पास डज नॉट हैव सफिशिएंट, नहीं ग्रोसली नेग्लिजेंस है फॉर हिज ड्यूटीज. हेल्ड गिल्टी अंडर क्लोज 8 एंड 7. क्लोज 7 में तो ग्रोसली नेग्लिजेंट है. क्लोज 8 में क्या है, उसने क्या नहीं किया है, डज नॉट कलेक्ट और प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस. रिपोर्ट ऑन अ प्रोप्राइटर फर्म एंड अ पार्टनरशिप फर्म. लोन जो भी लिया है, लोन टेकन बाय पार्टनरशिप ऑफ अ लैंड इज अ परचेज बाय पार्टनर बट लैंड परचेज वॉज शोन इन प्रोप्राइटरशिप इन correctly. Hence, he guilty under clause 8, 7, clause 6 and clause 2. Report on a proprietor's firm and partnership firm. Loan taken by partner and land is purchased by partnership but land purchase was shown in proprietorship is correctly. Hence, he guilty है under clause 7 and 8 and 6. देखिए क्लोज 9 क्या बोलता है. क्लोज 9 सिंपल बोलता है कि ऑडिट प्रोसीजर सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर
ऑडिट प्रोसीजर क्या है? व्हाट विल बी द ऑडिट प्रोसीजर? जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर एज गिवन इन स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट एक्सेट्रा नॉट फॉलो. Such a departure along with justified reason are not explained in audit report. Reporting departures if there are justified reason for not following generally accepted audit procedure and it is properly explained in audit report, then it is not guilty. But reporting without a justified reason will not protect CA from professional misconduct. So only reporting cannot serve CA. Generally accepted audit procedure के standards and guidance note are source of generally accepted audit procedure, but apart from above, sometimes procedure are given in a law, regulations, special procedures issued by authority or terms of condition. Guilty under clause 9 in the following cases: peer review certificate not taken. देखो clause 9 क्या होता है? Simply audit procedure. Peer review certificate not taken before doing audit of listed companies as required by CB. MRN, FRN not specified while signing reports and certificate. You did not specify within 60 days of audit report on certificates. Clause 10 is bank account. देखो बैंक अकाउंट क्या होता है? सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ मनी नॉट कैप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट. क्लोज 10 में क्या होता है? बैंक अकाउंट सी इन प्रैक्टिस जो है वो गिल्टी होगा, डीम टू बी ऑफ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ मनी नॉट कैप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा जा रहा है. फी रेमुनेशन शॉर्ट टर्म एक्सपेंस कैन बी कैप्ट इन जनरल बैंक अकाउंट ऑफ अ फर्म. मनी अदर देन लाइक इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेलिंग, प्रोप्राइटरी, लॉन्ग टर्म पर्पज शुड बी कैप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इफ मनी इज नॉट यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज विद इन रीजनेबल टाइम. देन पार्ट 2 आता है एप्लीकेबल टू सी इन जनरल वेदर और नॉट इन प्रैक्टिस. देखिए ये एप्लीकेबल है टू सी ए इन ए जनरल वेदर और नॉट. तो हमारा यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड शेड्यूल के जो 10 क्लोजेज है वो आइडियली सम अप हो जाते हैं. तो देखिए सेकंड शेड्यूल में 10 क्लोजेज है. क्लोज नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें करता है. क्लोज टू किसकी बात करता है? कि हमें रिपोर्ट करना है नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लोज 3 फ्यूचर एस्टिमेट. क्लोज 4 क्या होता है? सिंपली सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए. एक बार हम उसको चेक भी कर सकते हैं. देखो क्लोज 4 क्या था? क्लोज 4 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. क्लोज 5 मटेरियल फैक्ट. क्लोज 6 मटेरियल एंड मिस स्टेटमेंट. क्लोज 7 ग्रोसली नेग्लिजेंट. क्लोज 8 की सफिशेंट क्या बोलते हैं हम उसे? सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं प्रोवाइड किए, ग्रोसली नेग्लिजेंट है. एंड सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दी है. क्लोज 9 बोलता है सिंपली क्लोज 9 क्या था? ऑडिट प्रोसीजर. एंड क्लोज 10 आ जाता है हमारा. देन कम्स दी बैंक अकाउंट. Same practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if money not kept in a separate bank account. Fee remuneration short-term expense can be kept in a general bank account of a firm. Money other than this, like investment, buying, selling property, long-term purpose, should be kept in a separate bank account if money is not used for specific purpose within the reasonable time. उसके बाद मतलब बैंक अकाउंट सेम प्रैक्टिस विल बी डीम टू बी गिल्टी हो जाएगा अगर मनी नॉट कैप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा. या फी रेमुनेशन शॉर्ट टर्म एक्सपेंस कैन बी. देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. फी रेमुनेशन शॉर्ट टर्म एक्सपेंस कैन बी कैप्ट इन ए जनरल बैंक अकाउंट ऑफ अ फर्म. मनी अदर देन लाइक इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेलिंग प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म पर्पज शुड बी कैप्ट इन ए सेपरेट इफ मनी इज नॉट यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज विद इन रीजनेबल टाइम. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? देखिए नेक्स्ट आता है एप्लीकेबल टू सी इन जनरल वेदर और नॉट इन प्रैक्टिस. अब इसमें हमारे पास आता है क्लोज 1 बात करता है कॉन्ट्रावेंशन के बारे में. तो सी ए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट विल बी गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है कोई भी प्रोविजन ऑफ सी ए एक्ट रेगुलेशन इशू बाय ICAI गाइडलाइंस इशू बाय ICAI. तो सी ए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट विल बी गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल. वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रावीन कर रहा है रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दी है उसको. उसके बाद any case is covered in other clauses then that particular clause should be applied. If it is not covered in any other clause and there is a contravention, then apply clause 1. This is as per the rules of interpretation, specific overrides, general guidelines broken. If not covered other clauses, then apply clause 1. उसके बाद रेगुलेशन रिलेटेड टू आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन रिलेटेड. चार्जिंग प्रीमियम फॉर आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउ. देखो आप आर्टिकल से पैसा ले रहे हो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए वो अलाउ नहीं है. तो प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाता है हमारे किस में? सेकेंड शेड्यूल का हमारा हो जाता है पार्ट 2 क्लोज 1.
Asking security deposit for articleship registration not allow. Asking for loan for articleship registration not allow. Money cannot be demanded from article directly or indirectly through business entities or family. Cannot train without COP or go beyond maximum number of articles allow. Working hours related flexible hour not allow. Short term between 9 a.m. to 11 a.m. 9 a.m. से 11. Start time between. Okay. देखो वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल आवर होने चाहिए नॉट अलाउड. स्टार्ट टाइम बिटवीन 9 to 11 AM और एंड हो जाना चाहिए 5 to 7. मैक्सिमम 35 आवर्स. देखो रेगुलेशन रिलेटेड टू आर्टिकलशिप से रिलेटेड रेगुलेशंस में क्या बोला जाता है, आप आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए से प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते हैं. सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर आर्टिकलशिप वो भी अलाउ नहीं है. आस्किंग फॉर लोन फॉर आर्टिकलशिप से आर्टिकल से आप लोन लेने को सोच रहे हो तो वो भी अलाउ नहीं है. मनी कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम आर्टिकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू बिजनेस एंटिटी ऑफ फैमिली. कैन नॉट ट्रेन विदाउट COP. अगर आपके पास COP नहीं है तो आप ट्रेन नहीं कर सकते. एंड गो बियॉन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल से आप ज़्यादा नहीं जा सकते हो. वर्किंग आवर्स रिलेटेड फ्लेक्सिबल आवर्स अलाउ नहीं है. और स्टार्ट टाइम 9 या 11 यहाँ से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम आप 5 to 7 तक जा सकते हो. मैक्सिमम 35 आवर्स ही पर वीक आप काम करा सकते हो एक्सक्लूडिंग लंच ब्रेक. लंच ब्रेक को हटा दो उसमें से. एंड हेक्टिक सीजन में मैक्सिमम 45 आवर्स पर वीक. कंपनसेटरी लीव इफ वर्किंग आवर्स. कंपनसेटरी लीव्स भी आपको देनी है अगर वर्किंग आवर एक्सीड कर जाते हैं 35 आवर्स पर वीक. अदर वर्क नो कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में कॉलेज नहीं पॉसिबल है. नो अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन अनलेस अप्रूव बाय ICI. एडिशनल कोर्स ओनली आफ्टर अप्रूवल. अंडर एडिशनल कोर्स आप कर सकते हो जैसे कि BCom कर रहे हो या MCom कर रहे हो आर्टिकलशिप के साथ, तो वो ओनली अगर आप 112 जो करस्पॉन्डेंस फॉर्म होता है वो फाइल करते हो. स्टाइपेंड रिलेटेड मंथली पेमेंट अकाउंट पे आपको स्टाइपेंड कैसे मिलना चाहिए, या तो आपको अकाउंट पे क्रॉस चेक से या फिर बैंक डिपॉजिट से. इन दो में से या तो आपको क्या मिलना चाहिए, अकाउंट पे क्रॉस चेक या फिर बैंक डिपॉजिट. Regulation related to this CPAs, ICA has a specified minimum CPAs containing professional education for CA in practice and not in practice. If these are not achieved, then contravention हो जाएगा regulations का. उसके बाद कोचिंग एडवाइस नॉट टू टेक क्लास बिटवीन 9:30 to 5:30 PM. दिस इज रिकमेंडेटरी नॉट गिल्टी इवन इफ नॉट फॉलोड. फिर क्लोज टू क्या आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी. अब कॉन्फिडेंशियलिटी का CA इन सर्विस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी हो जाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. Exception required by law, permitted by client. Job can be with a company and a person from etc. फिर आता है हमारा क्लोज 3. क्लोज 3 we will discuss after a break.
देखिए फर्दर हमें डिस्कस करना है एप्लीकेबल टू सी एस वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। क्लोज वन जो है अदर मिसकंडक्ट सी इन प्रैक्टिस और नॉट विल बी deemed to be guilty of other misconduct if held guilty by civil and criminal court for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months। फिर आता है पार्ट 4 जो कि है काउंसिल जनरल गाइडलाइंस टेकन फॉर ऑडिट असाइनमेंट। मैक्सिमम क्या है 60 फॉर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी एंड फॉर्म लिमिट इज 60। टैक्स ऑडिट असाइनमेंट कितना ले सकता है 60 फॉर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 60 एंड 60 नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड डोंट काउंट पार्टनर्स विद पार्ट टाइम सीओपी हमें काउंट नहीं करना है। 60 मल्टीप्लाई मतलब एक पार्टनर 60 ले सकता है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है और अगर पार्ट टाइम है तो उसका हम काउंट नहीं करेंगे। इफ पार्टनर इन मल्टीपल फर्म एंड ऑल्सो इन यूजल प्रैक्टिस देन टोटल असाइनमेंट इन हिज नेम के नॉट क्रॉस 60। एक्सक्लूड करना है ऑडिट अंडर Section 44 AD shall businessman and not going for presumptive tax. Section 44 AD is small professional not going for this. 44A is a small transporter not going for. Counted as a one head office and branches, multiple branches, joint audit different financial year of same assessee performed during the year will be counted separately. Limit usage क्या limit of one partner can be used by another. Records maintain record of tax audit assignment performed during the year. Assignment distribution limit of firm can be used by any partner but work should be distributed to ensure maintaining quality as per SQC 1। उसके बाद आता है हमारे पास अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फ़ी। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फ़ी क्या होता है डोंट एक्सेप्ट ऑडिट असाइनमेंट इफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फ़ी ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट पेड। Undisputed audit fee means provision of audit fee as appearing in financial statements signed by both auditor and auditee include expenses incurred by auditor. Not applicable to SecUnit. SecUnit means entity registered for 5 years or more and accumulated losses and equal to exceeds the net worth. Also refer clause 8 which is applicable to all types of audit. Company audit assignment all points are same as audit assignment except following difference. Maximum limit for company audit कितना है 30। एक्सक्लूजन है जिसमें क्या नहीं आता है 1% कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं आता है लिमिट 1% कैन नॉट बी यूज बाय अदर्स। सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है 20 विथ 4 एक्सक्लूजन। देखो कंपनीज एक्ट तो 20 ऑडिट की बात करता है और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है 30। ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ ऑलवेज अप्लाई कंपनी ऑडिट लिमिट। हमें देखो कंपनी ऑडिट की लिमिट ही अप्लाई करनी है ऑफ 20 अनलेस रेफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइडलाइंस बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ 30। हमें 20 ही अप्लाई करना है जब तक कि 30 प्रॉपर्ली मेंशन ना हो। इफ़ बोथ आर एप्लीकेबल हो रहा है तो फर्स्ट अप्लाई कर लो 20 एंड देन सॉल्व केस एंड देन फिर 30 को सॉल्व करके हमें बता देना नन ऑफ द लिमिट शुड बी ब्रीच। Corporate form of practice name approval and registration with ROC as well as ICI purpose management consultancy and other service. No audit tax consultancies money sensitive activity like administrator arbitrator liquidator receiver trustee executor equity holding no restriction C along with a relative can hold shares। तो लिमिट क्या आ जाती है कंपनी ऑडिट असाइनमेंट पे 20 की लिमिट आ जाती है। टैक्स ऑडिट में तो आपके पास 60 कंपनी ऑडिट्स में कितनी है 20 है एज पर कंपनीज एक्ट। उसमें कुछ एक्सक्लूजन है डोरमेंट कंपनी स्मॉल कंपनी 1% कंपनी वगैरह। Managing director whole time director in MCC full time COP and other part time COP. Ethical compliance all of them will be applicable. No prohibited service. No audit fee should not exceed a start audit fee clause 6 and 7 undertaking regarding compliance of above. Maximum non audit fee जो है work assignment and service applicability PSU government company listed company public company turnover 50 crore or more. Condition no audit fee should not exceed statutory company audit fee. Non audit fee include fee of all management consultancy एंड अदर सर्विस। उसके बाद आता है हम ऑडिट फ़ी अंडर अदर लॉ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड टू बी डन बाय स्टेट ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन फ़ी बिफोर अथॉरिटीज़। उसके बाद कंबाइंड फ़ी नॉन ऑडिट फ़ी ऑफ ऑडिट फर्म एंड इट्स एसोसिएट कंसल्टेटिव्स आर डायरेक्टर इन ए कंपनी। कंबाइंड फ़ी नॉन ऑडिट फ़ी ऑफ ऑडिट फर्म एंड इट्स एसोसिएट कंसर्न शुड बी टेकन टुगेदर। एसोसिएट कंसर्न मीन्स concern where proprietor partner of audit firm and their relative audit and director in company partner in firm and hold substantial interest.
Statutory audit fee of 10 crore, company audit firm non audit fee combined should not exceed 10 crore, associate concern. बुक्स ऑफ अकाउंट क्या ऑल सी एन प्रैक्टिस प्रिपेयर करें, मेंटेन करें, प्रिजर्व करें, कंप्लीट एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैश बुक लेजर नॉट वैलिड एक्सेल रिकॉर्ड्स मोबाइल रिकॉर्ड्स ओनली असाइनमेंट रिकॉर्ड्स irrespective of whether crossing exemption limit applicability of books and audit under tax laws UDN is applicable to all reporting certificate and other attached function should be generated within 60 days of signing and presented on the report covered under clause 9 also logo same as studied before no blue rectangle CN India below it in blue two upside down ticks saffron green color no charges no ticking tilting allowed on stamps conducting of employees due diligence avoid gross negligence responding to tenders same as clause 6 clarification indebtedness limit as per council general guidelines यहाँ से right off कर दीजिए उसके बाद indebtedness limit as per council general guidelines and a recent decision of ESB ethical standard board ESB क्या था SB is the standard board E is for only to statutory audit, companies audit, tax audit, GST, company society audit, not applicable to internal audit, concurrent audit, or audit where report is made for management internal purpose. Indebtedness consider indebtedness security or guarantee given on behalf of a third party to entity of CA, partner, firm, relative of CA or partner. If given by law, follow it. If not given by law, then it will be 1 lakh. Company Society Act, Trust Act. Guidelines for network broad meaning large structure collection of entity who agree to cooperate of work together. Not all larger structure and network where cooperation is limited like just referring work to each other sharing same cost or research and development. So if reasonable informed third party is given detail of all association and in their professional judgment it appears like they are cooperating and work together and then it's broadly considered network. We may go to third party and imagine situation from point of view of third party specific meaning deemed a network. Larger structure will deemed as a network if cooperation includes following things in a sequence of importance information law particular individual logo में CA logo proprietor partnership firm same common ownership control management common brand name initial common profit and cost sharing but sharing only immaterial costs such as developing audit methodology manuals training course will not be a network common strategy common resource sharing देखिए उसके बाद क्या आता है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज शेयरिंग लाइक एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन पार्टनर स्टाफ टेक्निकल डिपार्टमेंट कॉमन पूल ऑफ स्टाफ और कॉमन टेक्निकल डिपार्टमेंट इज कंसिडर सिग्निफिकेंट बट शेयरिंग लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक ओनली मैनुअल्स ट्रेनिंग टीम विल नॉट लीड टू नेटवर्क common quality control system forms of network in sequence of a size manual entity agreement based association partnership firm party should not exceed 20 LLP company sole proprietor partner firm MCC can join network. One firm entity should join only one network. If there are common partner firm, they should also join same network. Approval of name firm may have separate distinctive name. Get it approved by ICI as per regulation 190. ICI has to approve or reject name within 30 days of application. Name of network suffix and affiliates. Name of firm and associates or company. And affiliates लगा सकते हो and associates और and company लगा सकते हो. Name of the firm can be this and this and associate this and this and company this and this and affiliates. Registration get name approved from ICI within 3 months. Get registered with else they will cancel assigned name. Manner firm can be only Indian firm registered in India. These firm may cater only in India. They can be Indian MNCs catering various nation. Foreign firms can also register in network. Just fill up Form D within 30 days. One standard condition is one firm joining one network and also other firm with a common partner has to join same network. If there is a change in a constitution, then inform within 30 days in a Form C. Prohibited is statutory auditor firm and its associate concerned should not directly and indirectly with the help of a network firm should not provide prohibited service. Advertisement guidelines should be followed. One firm of a network goes under rotation of all firms and will go under rotation. Ceiling on a non-audit fee is statutory audit firm and associate concerned non-audit fee should not exceed a statutory audit fee. Other firm in a network collectively वो क्या करेंगे that will be
Get a known audit fee and a 3 times of audit fee. Always refer clause 6 website, clause 7 write up. Online third party platforms, network A, B, C, D, and this known audit fee. Other firm known audit fee. Combined statute not exceed statutory audit fee should not exceed 3 times of statutory audit fee. Framework of network by laws, management related management committee, managing partner, administration, dispute engagement partner, identification, technical related technical director, software library, and training. Resource related methodology of drawing resources, compensation. Lines क्या है for advertisement write up piece of information like article expressed in a form of text. Shortcut will be this. Compliance of CA Act regulation guideline. No comparisons of disparaging or unsubstantiated remarks on others. Don't bring disrepute to ICI profession. Font size not exceeding 14. No exaggerated claims about service qualification and experience. Honest. No monograms. No endorsement client names. ICI may and directives for withdrawal. Identification of MRN, FRN. No achievement position unless given by government and regulatory bodies. आता है हमारा particulars, individual, proprietor, partnership, logo same, identification MRN, FRN. इंडिविजुअल के लिए और देखो इंफॉर्मेशन क्या अलाउ है. देखो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म. लोगो सी इंडिविजुअल के लिए सी लोगो, इसके लिए भी सेम. आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल MRN जो मेंबरशिप नंबर होता है. और अगर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या होता है FRN. नेम CA नेम ऑफ फर्म, प्रोप्राइटर, पार्टनर, फोटो, पासपोर्ट फोटो सेम. प्रोप्राइटर पार्टनर डिटेल ACA, FCA, COP, डेटा, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज दिस विल बी सेम. पोजीशन एसोसिएट, डायरेक्टर, MD इन MCC नेटवर्क सेम. एक्सपीरियंस, एज, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फर्म कब एस्टेब्लिश हुआ है वो बताना है. Exemption details, see other professional articles, same. Service provided, yes. And this contact detail, yes, same. Sign date, place, yes, same. CA form in practice, websites, article update, bulletins, educational videos, assignment handle, nature of assignment, name of client and fee allowed, name of client and fee not allowed. देखो नेचर ऑफ असाइनमेंट तो बता सकते हो बट नेम ऑफ क्लाइंट और फी अलाउ नहीं. अनलेस अलाउ बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी इन और आउटसाइड इंडिया, गिव रेफरेंस. उसके बाद है सर्विस रेंडर, पुल रिक्वेस्ट होना चाहिए, पुश नहीं होना चाहिए. पुल information on website should as close as possible with ICI records. Name of website and official stationery visiting card allow soliciting to visit not. Online consultation allow with or without fee. Website name close to legal and trade name. No solicitation, professional content, no advertisement of others. Website name in a search engine. Pull model allow है, push model allow नहीं. Partner employment detail allow, year of establishment allow, passport style photograph. Then secrecy of client to be maintained, chat room allowed, code of ethics, C Act compliance. Links allow है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ICI रीजनल ब्रांच वेबसाइट, अदर प्रोफेशनल बॉडीज. आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल अलाउ अलॉन्ग विद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. Permission not required, any format, any color, any design. Social networking size links allowed but no solicitation. Identity and contact detail allow along with year of establishment. Permission not required, any format, any color, any design. Social networking size links allow but no solicitation. Clause 6 website, clause 7 write-up. Online third party platform, website of bank, finance companies, newspaper to provide consultancy service allow. CA name with a chartered accountant allow. Firm name, contact detail, professional achievement not allow. Telephone and other directories by telephone authorities or private bodies allowed to include name with or without payment of fee. Only CA section categories in alphabetic order without differential and permanent display only in directory or city or town. Open for all CA forms. Registration on best service aggregators like Urban Lab not allowed. Where technician, maintenance workers and event organizer. Specialized directories of Rotary Club, Chamber of Commerce, communities, name of firm, name, CA contact detail allow, display alphabetic order. Directorship details and hobbies allow, name brands not allow, press advertisement, clause 7.
Purpose: staff recruitment, own or client office, buy sell properties, own and client, restriction not prominent, bold new terms like well known or superior. Then self regulatory measures में क्या आता है? Not mandatory, just recommendatory to improve health growth of profession. Branch audit advice: don't take big team or 10 or more members of statutory audit from different city. Instead, have a small team of less than 10 members of local audit firm of same city. Exception: record of branch are maintained at a head office, so no physical movement required. Branch has significant operations, so movement of team is justified. Right to visit: statutory auditor will always have right to visit and access books and records. Joint audit: large company want to keep joint auditor, one service firm, one junior firm of less than 5 members. Senior firm should not object. Ratio between qualified and unqualified: ratio of qualified to unqualified staff should not be more than 1:5. Unqualified will not include article typist staff not involved in a professional work beyond. Disclosure by auditor: fee received for service by auditor through other service indirectly. Other firms are those who are auditor is a partner proprietor. Minimum fee: ICA has given minimum fee for different types of assignment for different categories of cities in annexure of guidance note on tax audit. It is recommendatory. Fee disclosure to ICA firm non public interest entity. If fee from audit client is more than 40% of total fee for consecutive 2 year public interest entities. Same only 20% instead of 40%. Inform ICA and prescribe format exemption. Total fee is not exceeding 20 lakh. If audit fee for client which is PSU, government company, nationalized bank, public financial institution and appointment is by government. Recent decision on ESB Section 6 COP related in CN service. Want to appear as a tax representative on behalf of employer under employment contract? No COP is required. On behalf of other employees or anyone else outside employment contract, COP is required. फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज 10 क्या बोलता है? देखो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में हमने क्लोज 10 में पढ़ा था सेम प्रैक्टिस कैन चार्ज फी ऑन अ परसेंटेज ऑफ utilization amount to educational institute for certifying the amount utilized by educational institution. Out of grant. First schedule part 1 clause 11. CA should to be tempered. Custom broker license. CA in practice cannot hold such a license agency. CA in practice cannot take agency of UTI, GIC, NSDL. Further in general, they cannot take other agency also in their name. Trust settler, just like liquidator in a company, CA in practice can become trust settler. Equity research advisor, CA in practice can become serve as ERA. इक्विटी रिसर्च एडवाइजर वो बन सकता है. कैन नॉट पब्लिश डिटेल रिपोर्ट्स विच गिव्स अ फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन एंड सर्कुलेटेड टू पब्लिक एट लार्ज. बट वो क्या है कि वो नहीं मतलब वो पब्लिश नहीं कर सकता अपने डिटेल रिपोर्ट्स टू पब्लिक एट लार्ज. CA in practice can become meditator. It is like arbitrator, mystery audit allow and merely allow evaluate the customer experience, employee performance. CA in practice cannot act as a trader or a patent registry attorney. Can provide a professional advice on intellectual property right, performance audit, service assessment of a centers of skill development council allow under MCOS. CA in service can register as e-return preparer or filer if it is not in conflict with employment contract but cannot certify return. Assist will be like giving assurance service. CA in practice can become registered authority and obtain DSC for clients. CA in practice equity derivative trading allow himself, not allow for client or others. Commodity trading not allow in any capacity. As per Companies Act, at least one director should be resident director. Resident director means one person who was in India for at least 182 days in a year. CA in practice can become such a resident director provided he is a non-executive director getting only sitting fee for attending such a board meeting and no other remuneration. Director simply sitter. Can become non-executive independent director in a cooperative bank. No day-to-day work. He partner not auditor. Professional director in cooperative bank allowed है. Other permissible to set up practice in IFC gift city. Can provide professional service to IFC unit in IFC from office outside this. सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज 4 बोलता है. सेकेंड शेड्यूल में हमारे पास पार्ट 1 क्लोज 4 में क्या बोला जाता है? सिंपली ये बोला जाता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट डू दिस एडवांस एंड सर्विलेंस फेलियर ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर
of entity should not value unquoted equity shares of same entity as it would affect independence just like prohibited service. This is given in income tax rules and further clarified by ASB. Joint venture audit क्या है? If CA in a practice is an NED in a company or a partnership firm and this entity act as a venturer and run a joint venture, then such a CA in practice cannot do statutory audit of such joint auditor and would affect independence. If immediate family member, spouse or dependent is holding honorary service in managing committee of among of the institute governed run by society, then CA in practice cannot become auditor of society. Director Urban of Cooperative Bank, CA in practice can become member of a board of management in a cooperative society bank getting only sitting fee. It is like becoming director and a simply sitter. Internal auditor of a PF trust, government company employment, PF trust and statutory auditor, internal auditor cannot. देखिए फर्दर हमें बोला जाता है कि अगर शेयर करे परचेज करे बाय इंटरनल ऑडिटर नो प्रोहिबिशन अलाउ इंटरनल ऑडिटर कैन बाय शेयर्स ऑफ सेम प्रैक्टिस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर एंड प्रोक्योरमेंट्स ऑफिस साइमल्टेनियसली कॉन्करेंट ऑडिटर स्पॉन्सर है क्या concurrent auditor cannot statutory compilation under SRS 4410 by statutory auditor not allowed. Bank audit. CA in practice cannot do bank audit if he has taken loan from same bank even if loan is taken against FD. BRSR statutory audit advisory allowed है preparation not allow assurance provided allowed. Internal auditor of a company internal auditor क्या है employee PF trust statutory auditor. Because PF trust statutory audit is not as sensitive as a company statutory auditor, trust auditor, trustee cannot do audit. Member of trust beneficiary can do state audit. Stock audit. Statutory auditor of bank cannot do stock audit, inspection audit for same bank in financial year irrespective of same branch or any other branch or sister concern. Council guidelines क्या बोलता है? In-depthness जो कि cover है in the council guidelines. Council Advertisement Guidelines 2008 and Clause 6 क्या है? Is the joint training. Multiple CA taking joint training for the client and sharing fee allowed है. उद्योग आधार registration CA firm can go for register themselves and obtain उद्योग आधार. It is allowed as doing any other occupation and business. Messaging application cannot use Telegram etc. to advertise service offered. Kiosk based service in practice can provide permitted professional service through kiosk. Visiting card is stationery vision and values not allowed under clause 6. QR code. देखिए QR कोड के लिए हमें क्या बोला है? Allow under clause 7 provided information saved is allowed on visiting cards. Photo don't allow under clause 6. Promoted director on a company website is allowed no professional attainment. Cannot exercise line over client records even if he is not paid. Same practice acting as a director of a company cannot sign ROC forms of same company, cannot apply second schedule part 1. Principle which tell us what is good and what is bad. Professional ethics principle which tell us what is good bad while performing professional activity. Code of ethics ICA has framed code of ethics which explains CA what is good and bad. Further motto, if inspired to maintain ethical behavior, या ऐशा सत्येषु जागृति, be aware ethical even if others are not. ऐशु सत्येषु awakening when the world is asleep. Overview of Code of Ethics. Code of Ethics is 1, 2, 3. Ethical principle based on International Code of Ethics by IESBA. Explain application of CA section, schedule guidelines, collection of past decided cases under various sections, clauses. Part of Code of Ethics, Volume 1. Part applicable to all CAs in a general, whether in practice or not, mandatory to comply with code. 5 fundamental principle conceptual framework for implementation. उसके बाद हम बोलते हैं एप्लीकेबल टू सी ए टू इन ए सर्विस ऑल्सो सी ए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बट डूइंग जॉब एप्लीकेबल टू सी एन प्रैक्टिस एप्लीकेबल टू सी एन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट रिव्यू फॉर एश्योरेंस असाइनमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू. Meaning of specific terms के list of observations. Compliance करना with the code and structure of code. Compliance with the code or CA have to follow regulation contradict then don't follow that part of code of ethics but follow other parts of code of ethics. Structure of code of ethics क्या है? Background, outline, overview of upcoming portion. Specify कीजिए obligation of CA to follow certain things. General or specific additional explanation examples of act and implementation. Fundamental principle क्या है?
objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior and integrity. इंटीग्रिटी सब सेक्शन क्या बोला जाता है? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप. डोंट एसोसिएट विद एनी इन्फॉर्मेशन विच इज काइंड ऑफ एज ए मटेरियली मिसस्टेटेड, मिसलीडिंग. If CA comes to know that information is materially misstated, misleading, that disassociate from such engagement and modify report on such information. Oh God, the battery is getting low. We have to end up this.